In today's lecture, we are going to discuss your type 1 and type 2 superconductors. So there are two types of superconductors, so which is depending upon the behavior in their external field. That means ये जो दो types है superconductor के, they are depending upon their behavior, superconductors behavior in your external magnetic field. So first of kind is type 1, that is known as soft superconductor. So those superconductor which follows this respective graph, that is the graph between this your negative magnetization and your applied magnetic field intensity. So नेगेटिव मैग्नेटाइजेशन इसलिए क्योंकि जब बिकॉज जो हमारे सुपर कंडक्टर हैं दे बिहेव एज ए परफेक्ट डायमैग्नेटिक. सो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दे मैग्नेटाइज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है तो जो मैग्नेटाइजेशन कहाँ होगी डायमैग्नेट वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा. सो देयरफॉर दिस इज negative magnetization that is representing the magnetization in opposite direction. So this will be the behavior of your type 1 superconductor. That means it has superconducting stage up to this critical value of magnetic field. So therefore this type of superconductor is known as your टाइप 1 और सॉफ्ट सुपरकंडक्टर. सॉफ्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके लिए जो क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो होगी स्मॉल होगी एंड दे फॉलोज द मेजनर इफेक्ट वेरी स्ट्रिक्टली. So and they are perfectly diamagnetic. So after this value of Hc, small value of Hc, they jump to normal state. So therefore they have because they jump very strictly or very quickly, so therefore they have very little or limited application in the technology because of their lower value of this your critical magnetic field. So therefore they are perfect diamagnetic and follows Meissner effect strictly. This is their behavior, and the value of Hc is very स्मॉल बिकॉज थोड़ी सी भी फील्ड की वैल्यू थोड़ी सी क्रिटिकल फील्ड से थोड़ी सी वैल्यू देंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रॉन्ग तो क्या होगा सुपरकंडक्टर स्टेज से नॉर्मल स्टेज में क्या करेगा वो जंप कर जाएगा. सो ड्यू टू दिस दे हैव वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन इन द टेक्नोलॉजी और इन इलेक्ट्रॉनिक्स. So these types of superconductor is known as your type 1 superconductor or type soft superconductor. Soft means they have a small value of critical field, therefore they are known as your soft superconductor. Now there is another type of superconductor that is known as your type 2 superconductor or hard superconductor. So hard मतलब कि इसके लिए जो फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी ज़्यादा होगी. So those superconductor which follows this types of magnetic curve or a magnetization curve, so that is known as your type 2 superconductor. So it has some kind of some sort of complex curve. So this curve will have three phases. This first is purely superconducting stage. ये तो total by superconducting, but this one will have from this 0 to up to Hc1 is known as your normal superconducting state, and from this here to here that is second state, that is this stage is known as vortex state or your mixed state, and after this value of Hc2 this will have normal state. That means your superconductor will jump to your normal state. So therefore those kind of superconductor which follows this complex magnetization curve is known as your hard superconductor or type 2 superconductor. So therefore from this curve we know that there is large value of critical field, therefore they are known as your hard superconductor, and they do not follow the Meissner curve very strictly. So these type 2 superconductors they do not abruptly jump to normal state. जैसे इसमें है कि एकदम से नॉर्मल स्टेट में जंप कर रहा है, सो यहाँ से अगर Hc के ऊपर जा रहा है तो देर इज़ नो नॉर्मल, इट इज़ स्टिल इन द सुपरकंडक्टिंग स्टेट. देर आर सपोज
three values of critical field, that is SC1, SC and SC2. So therefore they have large spectrum of that is your critical field. So therefore they are known as hard superconductor. So because they have a very large values of critical fields, therefore they have very potential and very wide applications in your technology. So you can say that they don't follow that is your Meissner effect strictly, and they do not jump to the normal state like type 1 superconductor. So these type of superconductors show superconducting properties up to SC2, इधर से SC2 तक, एंड आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक कहाँ तक होंगे, SC1 तक. SC1 तक जैसे ये है यहाँ तक, SC1 तक they will have perfect diamagnetic and follow the Meissner law strictly. But after this SC1, when this value is crossing SC1, and then they will not follow the Meissner law strictly, and they from SC1 to SC and SC1 to SC2 they will have the field inside the magnetic superconductor. So from your SC1 and SC2, the field inside your मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. यहाँ पे बिल्कुल जीरो था बिकॉज ये सुपर कंडक्टिंग प्योरली मैग्नेटिक लॉ को स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहे थे. मैग्नेटिक लॉ में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इनसाइड दैट सुपर कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो, बट हेयर इज नॉट इक्वल टू जीरो. therefore this from here SC1 to SC2 it has vortex state, that is mixed state. Therefore there will be some value of magnetic field, and Meissner law is not. So इधर से देखो, Meissner law does not follow the Meissner effect strictly. So from this condition they do not follow the Meissner law strictly. SC1 के बाद और SC2 के बीच में they do not follow the Meissner law. इस एरिया में they do not follow the Meissner law, but before the SC1 इस law में they will follow the Meissner law strictly. So hence we can say that a large magnetic field is required, to destroy this superconducting state of this type 2 superconductor. So you can also say that this specimen, your type 2 superconductor, this specimen is said to be in vortex state or mixed state between SC1 and SC2. So this specimen is the mixture of superconducting state nor superconducting region, that is this, and this is also mixed. So and some alloys and some transition metal with high value of electrical resistivity in the normal state, and certain newly developed ceramics belongs to this category, this type 2 superconductor. So because of this high value of critical field required to destroy this superconductivity, these material, that is type 2 superconductors, find many practical applications in the technology, and these are used to make high field magnets because इसकी critical field ज़्यादा है. So these are used to make high field magnets for particle accelerator, जो हमारे जैसे हमारा जो स्विट्ज़रलैंड में जो हमारा सर्न, वहाँ पे जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर पार्टिकल एक्सीलेटर है, वहाँ पे लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सीलेटर है, एंड फ्यूजन रिएक्टर्स एंड एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक लेविटेशन, जो मैग्नेटिक फॉरेन में जो मैग्नेटिक लेविटेशन वाली ट्रेन होती हैं उसके लिए जो मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट होते हैं, जो मैग्नेट चाहिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. So therefore they type 2 superconductor, hard superconductor, have very potential and very wide range of applications in the technology due to their high values of your critical field. So next topic is penetration of the magnetic field. So in the Meissner effect we know that this is the Meissner effect. We know that, so this is the normal state when the material is a normal conductor, and so when it is placed inside the magnetic field, so all the magnetic flux that penetrates through this normal conductor. So when
This normal conductor is made superconductor by cooling by cryogenic process. So thus it expels all the magnetic flux inside from it. So it does not allow the magnetic flux to pass through it. So therefore ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है यहाँ पे या फ्लक्स लाइन जो है वो क्या हो रही है, इसको ये सुपरकंडक्टर एक्सपेल कर रहा है, मतलब अपने अंदर से पास नहीं होने दे रहा, बट नॉर्मल कंडक्टर क्या होता है पूरा पास होने देता है. सो you can say that when this is made superconductor, so it the magnetic flux cannot penetrate through this superconductor. So thus we know that according to the Mason effect, superconductor expels all the magnetic flux. That the meaning of this statement is that the currents in the superconductors are superficial. Superficial mean कि जो हमारे जो जैसे ये मतलब फ्लक्स मतलब फ्लो हो रहा है इसमें से, फ्लक्स इसमें से फ्लो हो रहा है तो करंट पास होगा इसमें से, बट यहाँ से देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, सरफेस के ऊपर ऊपर से जा रहा है, मतलब अंदर से पास नहीं हो रहा. मतलब सुपरफिशियल मीन्स इट इज़ ओनली ऑन द सरफेस ओनली, करंट विल बी ऑन द सरफेस ओनली, द करंट कैन नॉट पेनिट्रेट द दिस सुपर कंडक्टर. सो इट इज़ ऑन द सरफेस ओनली. दिस मीन्स सुपरफिशियल का मतलब ये है कि सरफेस के ऊपर होगा. सो इफ़ this is not the, so that means if the current is not superficial and your superconducting is allowing some fraction of magnetic flux inside it, कि अगर मतलब थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स उस सुपरकंडक्टर में से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा करंट भी इसके इंटीरियर में फ्लो होगा. So if you assume that if the current is present in the interior of superconductor, so it will produce a magnetic field inside the superconductor. Means अगर करंट हमारा जैसे नॉर्मल कंडक्टर में पास हो रहा है, अगर करंट इसमें से पास हो रहा है, मतलब इसमें से नॉर्मल करंट पास हो रहा है, तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, क्योंकि करंट अगर फ्लो होगा तो करंट की वजह क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. फ्राइडे की अकॉर्डिंग टू द फ्राइडे लॉ. सो इफ करंट इज पासिंग थ्रू दिस superconductor, there will be some magnetic field inside the superconductor which is against the Mason's effect. So how hence the current are superficial but cannot exactly microscopically superficial. मीन्स करंट क्या हो रहा है हमारा, वो सरफेस के ऊपर ही है, बट अगर हम बिल्कुल थोड़ा इनसाइड जाएं, बिल्कुल डीप, अगर डीपली उसको स्टडी करें, सो दे आर नॉट एग्जैक्टली माइक्रोस्कोपिकली सुपरफिशियल, मतलब वो पूरे तरह से सरफेस के ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि कुछ फ्रैक्शन उसका क्या होगा, अगर सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहे हैं तो कुछ उसका फ्रैक्शन क्या होगा, उसको पेनिट्रेट भी करेगा. सो दस द ऑर्बिट ऑफ करंट कैरिंग द इलेक्ट्रॉन, कि अगर जो मतलब अगर हमारा एटम है सुपरकंडक्टर में, मतलब अगर ये एटम है सुपरकंडक्टर का एटम, ये न्यूक्लियस है, तो क्या होगा, दिस इज द ऑर्बिट ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है. सो दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट पेनिट्रेट ए फाइनाइट डिस्टेंस इनटू द स्पेसिमेन, कि अगर कोई स्पेसिमेन हमारे सुपरकंडक्टर में, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो करंट मतलब करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, करंट लूप है, तो वो करंट या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कुछ पेनिट्रेट करेगा, कुछ सरफेस को पेनिट्रेट करेगा सुपरकंडक्टर का. उस पेनिट्रेशन को अगर उस स्मॉल पेनिट्रेशन फ्रैक्शन ऑफ पेनिट्रेशन को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ. एंड अकॉर्डिंग टू some another physicist London, that penetration inside your superconductor by your that current is given as, that is magnetic field due to penetration is given as h0 e raised to power x डिवाइडेड बाय लैम्डा. तो जैसे जैसे पेनिट्रेशन मतलब धीरे धीरे अंदर की तरफ जाता जाएगा, इंटीरियर की तरफ, तो वो पेनिट्रेशन क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सुपरकंडक्टर विल बी टेंड्स टू डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली. तो जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो पेनिट्रेशन डेप्थ भी होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता जाएगा तो तुम्हारा सुपरकंडक्टर क्या होता जाएगा, दैट विल वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सुपरकंडक्टर की तरफ, नॉर्मल सुपरकंडक्टिंग रेंज की तरफ चलती जाएगी. जैसे हमारा ये है, मतलब ये टेम्परेचर जैसे अगर ये फील्ड अगर मैं इसको बोलूँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट भी क्या होगी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सुपर कंडक्टिंग स्टेज विल जम्प्स टू नॉर्मल स्टेट. फिर ऐसे ही कि जैसे हमारा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे क्या होगा, करंट भी क्या करेगा, मतलब सुपर कंडक्टर की इनसाइड को क्या करेगा, वो पेनिट्रेट करेगा. तो अगर पूरी तरह पेनिट्रेट कर देगा तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सुपर कंडक्टर, और सुपर कंडक्टर क्या होगा, उसकी सुपर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. Here H naught is the magnetic field at the surface and lambda is known as penetration. मतलब ये हमारा सरफेस है, यहाँ पे होगी सरफेस,
और ये इनसाइड है, सरफेस पे H0 है, और जैसे जैसे पेनिट्रेट करता जाएगा इंटीरियर को, और ये एक्स है तो एक्स की डिपेंडेंस है, जैसे जैसे एक्स में अंदर की तरफ जाता जाएगा तो फील्ड क्या होती जाएगी हमारी, वो होती जाएगी, डिक्रीज होगी इसके साथ, एक्स के साथ, जैसे जैसे एक्स के अंदर तरफ जाता है तो H0 का हमारी सरफेस की फील्ड वो डिक्रीज होती जाएगी. So thus this is a very important equation. So this H0 is the magnetic field at the surface. So this is at the surface, और जैसे जैसे मैं इसको पेनिट्रेट करता जाऊँगा तो इस सरफेस की फील्ड क्या होगी, वो क्या होती है, एक्सपोनेंशियली दैट विल reduces. And this where x is your distance from the surface to interior, or and lambda is your penetration depth, or it is known as your characteristic length. This is very important. And this characteristic or penetration depth is defined as the distance from the surface of the specimen up to under which, up to where magnetic field reduces to 1 upon e times the field at the surface. Means क्या होगा, इसको मैं लिखता हूँ e raised to power 1 upon e raised to power this, therefore this is nothing but this H0 upon e, this is 1 upon e times the field at this surface, and where this penetration depth is approximately of the order of 10 raised to power minus 7 centimeter to 10 raised to power minus 6 centimeter of the superconductor below the critical temperature. इतनी लेंथ होगी सुपरकंडक्टर के लिए बिलो द दिस क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि इस क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद सुपरकंडक्टर क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम्स ए नॉर्मल कंडक्टर. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पेनिट्रेशन डेप्थ एंड योर क्रिटिकल योर टेम्परेचर. तो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ पेनिट्रेशन डेप्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बट आफ्टर द क्रिटिकल टेम्परेचर it will exponentially increases. So next very important effect in case of superconductor we known as your isotope effect. So it is independently found by Maxwell and Sarin in 1950s. So and this isotope effect gives that the critical temperature of the superconductor varies with the isotopic mass. That means for one element critical temperature will be different for one isotopic mass and different for another isotope. So therefore this relation is given by that is critical temperature is inversely proportional to the square root of isotopic mass. So this gives by this relation critical temperature into square root of isotopic mass is equal to constant. So for example, critical temperature is 4.185 Kelvin for mercury having isotopic mass, for one isotope that is having mass 199.5 atomic mass unit, and this is for another critical temperature 4.146 Kelvin for mercury having another isotopic mass 203.4 atomic unit. So therefore having higher isotopic mass critical temperature is small from this relation, and smaller isotopic mass has larger critical temperature as predicted by this relation. So for the most of the material this relation, the power of this m is this 1 by 2, but for some exceptional materials, for some small number of materials this is not exactly 1 by 2. So therefore this law can be generalized, the generalized isotopic law, isotopic effect or law is given as, that is Tcm raised to power alpha is equal to constant, where this value of alpha is different for some materials, where for most of the material this alpha is equal to 1 by 2. So the value of alpha for some material is, I will give some value of alpha for different materials. Therefore this value of alpha can be different for different materials. Therefore for zinc this value of alpha 0.30, for mercury this is 0.50, this ruthenium or rutherfordium this is 0.0 plus minus, this is the variation plus minus 0.05. So for lead this is 0.48, and this is for
Nibodium and this is tin. Nibodium tin, this is 0.08. Therefore this value of alpha are different for that different materials. So now this isotopic, this relation that means this generalized relation that is for most of the material, this relation gives some clues about the establishment of the theory of superconductivity, because it is well known that this mean square amplitude of lattice vibration, this mass, this mean square this square root of this mass is also linked with the this square root of your lattice vibration. So heavier the isotopes, lower the lattice vibrations. We have studied this effect in the lattice vibration. So we know that is from lattice vibrations, heavier the isotopes, lower the vibrations. Higher the mass or heavier isotope, that is lower the lattice vibrations. So therefore in that lattice vibration we also studied the device temperature, that is theta d. So therefore from values of theta d, that is from the phonon spectrum, that is frequency of phonon, ये क्या बताता है बेसिकली, टेम्परेचर और फ्रिक्वेंसी बताता है, इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड फ्रिक्वेंसी, दैट इज फोनॉन स्पेक्ट्रम की फोनॉन का टेम्परेचर और उसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू में, इज फोटोन का स्पेक्ट्रम कैसे होगा, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू योर नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ योर मास. सो दैट मीन्स योर थीटा डी अगर इस इधर होगा तो इधर चला जाएगा 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 1. दैट इज, मैंने क्या बोला कि फोनॉन का स्पेक्ट्रम मीन्स देर आर वाइब्रेशंस ऑफ लेटाइस आयंस इन द नॉर्मल मोड्स, मतलब मोड्स होंगे उसकी वाइब्रेशन के, फोनॉन कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं अपने उसकी मेन पोजीशन पे, दैट कंस्टिट्यूट द समथिंग लाइक साउंड वेव्स, दैट इज ट्रैवलिंग थ्रू द सॉलिड. सॉलिड वेव को हम जिस सॉलिड वेव है क्या बोलते हैं उसको, सॉरी साउंड वेव है, दैट इज जैसे साउंड वेव वाइब्रेट करती हैं वैसे क्या करेंगे फोनॉन क्या करते हैं, फोनॉन में क्या करते हैं जो क्रिस्टल वाइब्रेट करते हैं, सो दे एमिट ए फोनॉन, सो फोनॉन की तरह बिहेव करते हैं साउंड वेव्स को हम क्रिस्टल में क्या फोनॉन की तरह बिहेव करते हैं. देयरफॉर दैट इज तो क्या बोला मैंने, फोनॉन का स्पेक्ट्रम, दैट मीन्स उसकी फ्रिक्वेंसी की क्या वैल्यूज़ होंगी, उसकी फोनॉन स्पेक्ट्रम मीन्स फोनॉन की फ्रिक्वेंसीज की वैल्यूज. सो देयरफॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं ये जो क्वेश्चन है, सो बाय इक्वेशन 1 and 2 we can have, so thus from this equation number 1 and from this equation number 2, because both are proportional to your this -1/2, so therefore this relation is, that is critical temperature is directly proportional to your device temperature, that means the फोनॉन के जो स्पेक्ट्रम है उसकी प्रोपोर्शनल है, दैट इज लेटाइस वाइब्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा क्रिटिकल टेम्परेचर. सो देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 3 it is established that electron phonon interaction is responsible for the superconductivity. That means lattice vibrations plays an important role in case of superconductivity. It is established from your isotopic effect. That is, it is very important statement.